Good afternoon, everyone. My name is Hitesh Angit from Mumbai Support, and today is the day 4 of this mega webinar of 5 days, and I'm covering the technical query with the price OHLC. So today we can see price OHLC, the remaining conditions, and tomorrow we'll see the price OHLC of intraday, which is specifically for the intraday users. Okay, so we'll start with the today's session. Before that, I'll cover a small revision of day 3. Okay, so whatever that we learned yesterday, that we'll discuss today, a short section, and then we'll move our today's condition. Okay, so yesterday's condition, first condition was column value equals to previous open. So basically, if a person wanted to compare your current day with the previous day, so they can use this condition. So first condition was comparing with the previous open. So if someone wanted to compare any input means if you're using any price input where it will be maybe a open, high, low, close. So you can compare with the previous day open. So if I wanted to compare open equals to previous day open, so I can use this condition. Okay, so you will get a result according to this condition. So at the time when you use this condition, it will also ask you to put a percentage, okay, within a percentage, which is a buffer level. Okay, so whenever you add any this input, so there will be an option of a within percentage. So if you use a 1, so it will take a 1% upper level and the lower level of the previous day open. So basically, it will take a buffer. Suppose example, if a stock is at 100, which is the previous stock is at 100 of previous day's open. Okay. Now, suppose if current day the stock closing value is at 100.30. 130. Okay. So suppose if that is more than that percentage level, so it will not appear. But at the same time, suppose if the percentage level is 10, okay, so it will take above the open price as a 10 percentage and as well as the lowest side. So it will ask you a percentage level. So in all these conditions, there will be a within percentage. So now in the condition 1, 2, 3, and 4, okay, so you can see a symbol is there which is equal. Okay, so whichever the input that you are using, that will include the previous day's open, high, low, or close. So if I wanted to compare with the previous day low, so I'll use the condition number 3. Or if I want to use to compare with the previous day close, so I have to use condition number 4. So in the similar way, you can use this condition to finding out a stock comparing with the previous day. Now condition number 5, 6, 7, and 8. Okay, so in this condition you can compare the stock within the day. Like suppose अगर मैं अपने closing price को अगर opening price के साथ compare करना चाहता हूँ, so I can identify. So for that, the column value is the input value that we are deciding. So there are different combination is there. Like suppose in a open, we can compare with the low, close, and high. Okay, so we can use this condition and accordingly you will get the results. So basically when you compare within the day, so that is mostly used for to finding out open equals to high or open equals to low. So that will give you a bullish or a bearish condition. So you can use this for intraday as well, or you can use for position as well. So for making a formation like a hammer, so you can use this condition. Now condition number 9, 10, 11, and 12. So you can see this all 4 condition where there is a symbol of greater than. So suppose if I wanted to scan a stock which is column value is greater than the previous open, so I can use this condition. So in the similar way, if I wanted to find out a stock where column value is greater than the previous day high, so I can use the condition number 10. In the same way, if I wanted to find out a stock which is input value is greater than previous day low, which we consider as a column value. So in this all the 4 condition, we can use
our input, and accordingly we need to put a percentage. Okay, the buffer percentage. Suppose if you don't want to add any buffer percentage, so you can put it 0. Okay, and now condition number 13, 14, 15 and 16, where you can see a column value is smaller than the previous day open. Okay, open and high and low and close. So simply we are comparing with the previous day, and your current day values are lower than the previous day high, low, close and open. So in the condition number 3, where you can see your previous day open is higher than the today's value, column value. Okay, so in the condition number 14, where you can see a previous day high is greater than the current column value. Okay, and the condition number 15 and 16, where you can see previous day low and the close is higher than the today's value. So in short, if someone wanted to create a query on the basis of the previous day, so we can use this. So this symbol will help us to create a query. So this was the part 3 where we discussed yesterday. Okay, so now we are going to the current day's topic. Okay, so this topic is first all-time high, all-time low, 52 weeks high and 52 weeks low. So these all 4 conditions are basically applied to live users, because this will work in live market, and the rest 5, 6, 7, 8, 9 it's applied to all. Okay, so basically when you see the green base green and green base red, so this is the kind of condition we use with the help of candles with the body. So we'll see later. So I'll start with the first condition, which is all-time high. Okay, I think everyone knows, if they are in a trading, so they know that every stock is making a all-time high or a new high. Okay, which means it's the highest price of that stock till now. Okay, and if that stock is crossing today, then you will get a results. So in short, जब भी कोई स्टॉक अपने जितने भी करियर में उसका जो हाईएस्ट प्राइस है, अगर उसका आज के दिन में क्रॉस होगा, तो हमें वो रिजल्ट दिखाएगा. तो जैसे एग्जांपल कि आज के दिन में अगर जब भी वो क्रॉस करेगा, तो उसका वो क्लोजिंग प्राइस कंसीडर होगा एक बार के लिए. ओके, जब भी कभी वो क्रॉस करेगा, वो उसको क्लोजिंग प्राइस ही कंसीडर होगा. देन अगर वो वहां से नीचे आता है, तो दैट विल कंसीडर एज अ हाई. बट जब वो फर्स्ट टाइम क्रॉस करेगा, तो वही प्राइस क्लोजिंग प्राइस भी हो गया उसके लिए. सो इन आर कंडीशन, हम जब टेक्निकल क्वेरी में जाते हैं, सो हमें सबसे पहले यहाँ पे प्राइस ओएचएलसी अगर हम डबल क्लिक करेंगे, तो हमें यहाँ पे कंडीशन बॉटम में मिलेगा. ओके, बॉटम के स्लाइड में आपको यहाँ पर लास्ट में मिलेगा ऑल टाइम हाई. ओके, सो जैसे आप इसको ऐड करोगे, आपको हमेशा इसको हमेशा लाइव में टिक करना है. ओके, आपको यहाँ पे रिजल्ट में लाइव टिक क्वेरी में टिक करना है, और इसके बाजू में और मे बी एट अ बॉटम यू कैन यूज अ रिलेशनशिप, और यहाँ पे आप डाल सकते हो C1. ओके, और उसको डिस्क्रिप्शन दे सकते हो. सेम वे अगर आपने यूज किया होगा लाइव मार्केट में, बिकॉज अभी ऑलमोस्ट मार्केट ओवर हो गया है, एंड अगर मैं इसको एक्शन पे करूँ तो मुझे दिखा देगा, बट इट विल टेक टाइम. सो हम क्या कर सकते हैं, मैंने इसको ऑलरेडी रन किया हुआ था, जो स्टॉक्स उसने ऑलरेडी लाइव मार्केट में रिजल्ट दिखाया है, वो मैं शो कर देता हूँ. ओके, सो अब यहाँ पे देखो ये सारे स्टॉक्स है. अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे जो भी स्टॉक्स है जिसने ऑल टाइम हाई क्रॉस किया, तो वहां पे आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस ऑल टाइम हाई, which means this stock is crossing at the all-time high level. So if I click on VTL, you can see the stock price is at high. Okay, so ये कैंडल जो है हमारा, वो जो कैंडल उसने बनाया है, फॉर्म किया है, उसका क्लोजिंग प्राइस हाईएस्ट लेवल पे है. Okay, so this condition will run only in live market. Okay, same way अगर आप यहाँ पे चेक करो टाटा एलेक्सी, इसको मैंने क्लिक किया, सेम वे देखो उसका क्लोजिंग प्राइस जो है वो हाईएस्ट पे है. सेम अगर मैं यहाँ पे थोड़ा और नीचे जाता हूँ, तो जितनी बार वो हाई क्रॉस करेगा, उतनी बार हमें यहाँ पे टिक्स दिखाएगा, ताकि आपको पता चले कि किस स्टॉक में मोमेंटम चल रहा है. अब ये कंडीशन यहाँ पे क्यों है, ताकि यू कैन ऐड ऑल टाइम हाई विद सम अदर इंडिकेटर, सो दैट आपके लिए वो बहुत इजी हो जाए फाइंड आउट करने के लिए. ओके, सो दिस टाइप ऑफ कंडीशन दैट यू कैन यूज इन लाइव मार्केट. सेम वे अगर आप यहाँ पे चेक करो, एक और कंडीशन है जिसको बोलते हैं ऑल टाइम लो.
ओके, सो ऑल टाइम लो इज एग्जैक्ट द वाइस वर्सा ऑफ ऑल टाइम हाई, जहां पर जो स्टॉक है वो अपने जितना भी करियर में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट आज के दिन में अगर बनाएगा तब वो उसमें शो करेगा। सेम वे जैसे मैंने प्रीवियस कंडीशन में बताया कि जो उसका लोएस्ट प्राइस रहेगा वही उसका एक बार के लिए क्लोजिंग प्राइस कंसिडर किया जाएगा जब वो क्रॉस करेगा। ओके, तो सपोज एग्जांपल कि ये उसका 1 ईयर का कैंडल है और उसने अगर आज उसने क्रॉस क्रॉस किया, सो वो ऑल टाइम लो कंसिडर किया जाएगा। सो जैसे अगर हम यहाँ पे कंडीशन में जाएंगे, आप जब उसको ऐड करोगे तो सेम वे आपको वहां पे ऑल टाइम लो चूज करना है। जब आप उसको ऑल टाइम लो चूज करोगे तो आपको स्टॉक्स दिखाएगा जो अब तक के करियर में उसका जो लोएस्ट प्राइस रहेगा वो आपको दिखाएगा। सो आप यहाँ पे चेक करो। आई थिंक मैंने देखा था ओके, सो ये स्टॉक ने जब लो मारा था तब उसमें दिखाया था, ऑल टाइम लो उसने दिखाया था। ओके, सेम वे अगर हम यहाँ पे चेक करें थोड़ा नीचे में आपको और भी स्टॉक्स मिल जाएंगे जो जिसने ऑल टाइम लो मारा। सो ये विंडो में जो भी स्टॉक्स आते रहेंगे वो इसके अंदर ऐड होता रहेगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन यूज दिस कंडीशन। अब देखो यहाँ पे ये रहा स्पंदना एट 325। ओके, सो यहाँ पे ऑल टाइम उसने दिखा, सो हमने यहाँ पे क्लिक करके उसको चेक कर लिया। सो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे वो क्रॉस कर रहा है, जितने बार वो क्रॉस करेगा आपको वो दिखाएगा, अलर्ट दिखाएगा। सो ये आपको यूजफुल हो सकता है इंट्राडे के लिए भी और ईओडी के लिए भी, बिकॉज अगर एक स्टॉक एट एंड में डे एंड पे अगर वो ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो क्रॉस कर रहा है तो चांसेस है कि वो नेक्स्ट डे गैप अप ही खुलेगा। एंड इफ समवन इज यूजिंग फॉर इंट्राडे, सो वी जस्ट ओनली नीड टू सी whether whenever the stock is crossing all time high or all time low, so is that stock is sustaining above or the below previous day high or low। अगर वो बुलिश है तो इट शुड सस्टेन अबाउ द प्रीवियस डे हाई, अगर वो लो है so that stock should sustain above, sorry, sustain below the previous day low। so we can use this for both the time frame। okay, तो सेम वे अब हम जाते हैं थर्ड कंडीशन है दैट इज 52 वीक्स हाई। ओके, सो सेम वे जैसे हमने ऑल टाइम हाई देखा वैसे ही यहाँ पे जो कंडीशन नंबर 3 है वो 52 वीक्स हाई है, जहां पर इफ अ स्टॉक इज क्रॉसिंग 1 ईयर हाई, तो जब भी एक साल का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो क्रॉस करेगा तो आपको ये यहाँ पे शो करेगा। सो इन शॉर्ट दिस इज ऑल्सो बुलिश कंडीशन, सो वी कैन यूज इन अ टेक्निकल क्वेरी। ओके, सो मैं यहाँ पे कंडीशन में जाता हूँ और मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। सो आई कैन यूज इन एनी टाइम फ्रेम बट स्टिल यू नीड टू टिक ऑन द लाइव क्वेरी। ओके, सो मैंने जैसे जैसे डबल क्लिक किया यहाँ पे सेम वे यू कैन ऐड 52 वीक्स हाई। ओके, आई एडेड एंड नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन द रिजल्ट लाइव क्वेरी। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखा रहा है टाटा एलेक्सी भी, आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर मैंने यहाँ पे दोनों कंडीशन साथ में भी रखी तो मुझे दिखा देगा कि किस स्टॉक ने ऑल टाइम हाई भी मारा और 52 वीक्स हाई भी मारा है। ओके, सो इन शॉर्ट इफ अ स्टॉक इज क्रॉसिंग ऑल टाइम हाई तो डेफिनेटली उसने 52 वीक्स हाई तो क्रॉस किया ही होगा। ओके, तो सेम वे जिस स्टॉक ने 52 वीक्स हाई क्रॉस किया है वो आपको यहाँ शो होके मिल जाएगा। ओके, सो नाउ अब जैसे मैंने वीटीएल पे क्लिक किया तो वहां पे आपको दिखा रहा है, उसके नीचे जो थोड़ा सा और ड्रा करके नीचे जाओ तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, क्लिक किया नाहर पॉली, क्लिक किया इसने हाई क्रॉस किया देन वो नीचे आया। अगर मैं इसका चार्ट देखने जाऊं, ओके, सो मैं यहाँ पे इसको, ओके, सो यहाँ पे जो करंट जनवरी है इस कंपेयरिंग विद द प्रीवियस जनवरी सेम डेट एंड उसका जो प्राइस है करंट ईयर वो हाईएस्ट प्राइस है। सो दिस कंडीशन वी कैन यूज। सो दिस इज 52 वीक्स हाई। एक और स्टॉक है जिसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया RHIM, तो सेम वे इसने भी आज एक साल का हाई क्रॉस किया है। अगर मुझे देखना है कि उसने ऑल टाइम हाई किया है कि नहीं किया, अगर उसके आसपास अगर उसने ऑल टाइम हाई भी क्रॉस किया होगा तो चांसेस है कि वो एक और अच्छा मूव कर सकता है। ओके, सो आप देख रहे हो वहां पे उसी जगह पर ऑल टाइम हाई एंड 52 वीक्स हाई दोनों है वहां पे। ओके, सो दिस कंडीशन विल हेल्प टू फाइंडिंग आउट ऑफ बुलिश स्टॉक्स। नाउ कंडीशन नंबर 4 जो है 52 वीक्स लो, तो सेम वे जब भी कभी एक स्टॉक एक साल का लोएस्ट पॉइंट क्रॉस करेगा so this will show us a alert। ओके, सो सेम वे आपको यहाँ पे कंडीशन ऐड करनी है एंड वहां पर खाली 52 वीक्स लो यूज करना है।
ओके, जैसे आपने यहाँ पे इसको लो यूज किया एंड लाइव, जैसे आपने टिक किया, आपको यहाँ पे स्टॉक्स मिल जाएंगे। ओके, आप यहाँ पे देख रहे हो स्पंदन का ऑलरेडी ऑल टाइम लो भी है, 50 वीक्स लो भी है। ओके, जो ऑल टाइम लो हो गया तो वो तो डेफिनेटली 50 वीक्स लो होगा ही, बट जो खाली 50 वीक्स लो है वो आप यहाँ पे देखो दैट इज 12। ओके, आप यहाँ पे देखो तो अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा करूँ, देखो ये इसके लिए वो ऑल टाइम लो नहीं है, ताकि उसका जो प्राइस है वो 1 साल का लो ही है। ओके, सो यहाँ पर जब कभी अगर ये स्टॉक्स ने आज तो क्रॉस किया है, मे बी पॉसिबल कि इसने कल भी क्रॉस किया हो। सो इन शॉर्ट, व्हेन आवर स्टॉक इज क्रॉसिंग 52 weeks low, so we can expect that this stock can move downside further. So हम क्या कर सकते हैं, हम अगर उसमें ट्रेड कर रहे हैं तो शॉर्ट भी कर सकते हैं, और मे बी अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन तो एग्जिट भी हो सकते हैं। सो आपको ट्रेंड क्लियर करता है वो। So in the same way we can see if a stock is crossing 50 weeks low, so we can exit from the long positions or we can initiate a fresh positions for low. ओके, जैसे ये एक्टिव होल्डिंग है, आपको यहाँ पे दिखा रहा है 102, और या इट्स मेकिंग अ न्यू लो 52 वीक्स लो। ओके, सो ये कंडीशन आप यूज कर सकते हो। सो दिस ऑल कंडीशन आर फॉर लाइव यूजर्स। ओके, अब प्रॉब्लम मुझे ये आ रहा है कि व्हेन आई सी दिस ऑल दिस कंडीशन इट्स ऑल इन ग्रे कलर, सो मुझे फाइंड आउट करने के लिए डिफिकल्टी हो रही है। सो फॉर दैट वी हैव अ कंडीशन ऑप्शन इन अ कंडीशन। सो अगर आपको कंडीशन में चेंज करना है तो यहाँ पे whenever you add a conditions, आपको वो जो एरिया है रिलेशन को उसको टिक करना है, एंड उसके बॉटम में राइट साइड में एक ऑप्शन है सेट कलर। ओके, सो अगर आप उस पर क्लिक करते हो, जो भी आपको कलर चाहिए वो सिलेक्ट कीजिए, एंड देन डिस्क्रिप्शन को भी सेम कलर दीजिए, बिकॉज अगर दोनों ही डिस्क्रिप्शन एंड द रिलेशन इज इन द सेम कलर, देन इट विल शो यू इन अ लाइव मार्केट विद द सेम कलर एज अ पॉपअप, so that will ease your work. Okay, so I given the different color to all the 4 conditions, and when I use the live results, so it will show you in different colors, so that will ease your work and that will help you to easily identify the stocks as per the condition. So मैंने यहाँ पे जैसे लो का है वो मुझे रेड में दिखा रहा है, जो 52 वीक्स हाई है वो ग्रीन में दिखा रहा है, एंड द स्टॉक्स व्हिच आर एट ऑल टाइम हाई, so that's showing in blue color, and the all-time low is in pink color, so it easily to identify. Okay, but you can see there is more condition, more option while showing results. So you can see on the right hand side there is an option show result in. So there are 3 options. First is this window, second is event selector, and the third one is live query tracker. So suppose if I'm using one query, so I can use this window as well. But if I have less space on my screen, so I can merge 2 query results on one window. So for that I need to put both query results on the same, like event selector, event tracker, or maybe live query tracker. Okay, so I can use, and then you will get both result in the same window. ओके, अगर मुझे लग रहा है कि मेरे पास स्पेस कम है, सो मैं 2 क्वेरी के रिजल्ट एक ही विंडो में डाल सकता हूं। सो उसके लिए मुझे खाली ये ऑप्शन जो है वो यूज करना है, शो रिजल्ट इन दिस विंडो की जगह पे मुझे खाली टिक करना है लाइव क्वेरी ट्रैकर, जिससे आपकी स्पेस कम यूज होगी और एक ही विंडो में आपको दोनों रिजल्ट आएगा। ओके, सो दैट यू कैन यूज। नाउ ये जो कंडीशन है, दिस ऑल टाइम हाई लो एंड 52 वीक्स हाई लो, ये कंडीशन ऑलरेडी हमारे पास 2 ऑप्शंस में है। लाइक आपके पास ये ऑप्शन है इवेंट सिलेक्टर में, आप यहाँ पे जाके टिक कर सकते हो। Okay, you can see in the first bullish condition there is 52 weeks high and all time high. Okay, the same way you can see in the bearish tab there is a 52 weeks low and all time low. Okay, so we already having this condition, but उसमें और इसमें difference क्या है? The thing is we can use this condition with some indicators, but वहां पे वो already define किया गया है, and the same way जो color है वो हम यहाँ पे define कर रहे हैं by using the relationship.
सो आपको वहां पे इजिली आइडेंटिफाई करने मिल रहा है। ओके, सो दैट्स व्हाई दैट वी आर यूजिंग दिस कंडीशन इन टेक्निकल क्वेरी। और साथ में अगर आपको फिर भी देखना है, सो देयर इज एन ऑप्शन इन रिपोर्ट एज अ मार्केट समरी, जहां पे आपको ऑलरेडी न्यू हाई विच इज 52 weeks high and new low which is 52 weeks low, and there is an option of all time high and all time low. So we have different options, but why this is differ, because we can easily use with our different conditions. Okay, so ye tha this four condition. Now the condition number 5 is open above x and y percentage of previous close. So basically this condition will help you to finding out opening comparing with the previous close. अब क्वेश्चन ये आता है कि we already had a condition where open is above the previous day close, which we used in yesterday, where column value is greater than the previous day close. So फर्क ये है कि यहाँ पे we can put a range. Okay, like I'll show you. Okay, जब मैं कंडीशन यूज कर रहा हूँ, open above x percentage and y percentage of previous close. So I am comparing your today's open with the previous day close, but we are defining a range. Okay, so range कितना भी हो सकता है, maybe if you wanted 1 से लेके 20 के बीच में, तो मैं वो भी यूज कर सकता हूँ, ताकि मुझे जो गैप ऑफ स्टॉक्स है एक बार के लिए मेरे को मिले, बट एज कंपेयरिंग विद द क्लोज। और इफ आई वांटेड टू कंपेयर कि मेरे को 1 से लेके 5 तक ही चाहिए, so I can use a 5% and then tick and then run. Okay, so now I am running on a NSE Nifty 500. Okay, now clicking on this historical and run. एक minute. Okay, so I'm getting these stocks which are in between 1 to 5% as compared to previous day close. So अगर मैं यहाँ पे Burger King को क्लिक कर रहा हूँ, okay, और अगर मैं देखूँ यहाँ पर, so previous day का जो close है वो है ये, okay, and close is 137.15 and your today's open is 139.25, तो लगभग 1.5 के आसपास है, ऊपर है, ओपन है। Okay, so same way, if you wanted to find out a stock where open is greater than the previous day's close, but you want to define a range, so you can use this condition and accordingly you can find out a stocks. Okay, so this condition is available with a range. Okay, same way, whenever we put a percentage, we always need to add in positive only, because when you want to find out a bearish condition, that time only you have to put a 1 2 3, not in negative, like which is the next condition, which is the condition number 6. Okay, so where open is below x and y percentage of previous day close. So that's why I told ki whenever you wanted to put a below condition, that time also you need to put a positive number, not in negative. Okay, because a percentage can be positive, percentage can be negative, but in this query we need to put a positive conditions. Okay, so where open is below the previous day close, so I have to go to this condition and I can modify. Now I am choosing open below x and y percentage of previous day close. Okay, so I can use this. Okay, so अगर मैंने यहाँ पे अपोलो टायर लिया है, so you can use कि मैंने जो क्लोजिंग है उससे ओपन काफी नीचे है, so I can easily find out a stock where I'm comparing with the previous day close and today's open, but the stock is in negative because it's gap down. It's kind of a gap down, not exact gap down, but it's a kind of gap down. Okay, so I can find out this stocks. This is Suzlon. Okay, you can see this is the closing price
and now you can see the open is below the previous day's close, and then it created a green candle. It's a kind of engulfing. Okay, so we can easily finding out stock where you can easily compare with the previous day close with current day open, also in range. So this is condition number 6. Okay, now the next condition, which is the next concept, which is on the basis of the candlestick. So first we need to identify the candles. Okay, so basically जब हम कैंडल्स देख रहे हैं, सो कैंडल्स दो टाइप की होती है, आइदर वीक कैंडल होगी या स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी. एंड टू फाइंडिंग आउट अ वीक कैंडल्स वी हैव अ सेटिंग नेम एज द बोरिंग कैंडल. ओके, जहां पे उसकी बॉडी काफी छोटी होती है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग कैंडल. ओके, सो जो वीक कैंडल होती है उसे हम बोलते हैं बेस कैंडल्स, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस में एक कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं रैली बेस रैली. सो जो बेस है उसको कंसिडर किया जाता है वीक कैंडल्स को, जहां पे बॉडी छोटी है. ओके, एंड जो दूसरी जो स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है उसे हम बोलते हैं अदर कैंडल. ओके, जो हम यहाँ पे नेक्स्ट सेटिंग्स में यूज करेंगे. ओके, सो वो जो सेटिंग्स है अगर आपको चार्ट पे एनेबल करनी है, सो आपको चार्ट में जाना होगा, आपको राइट क्लिक करना है. देयर इज एन ऑप्शन ऑफ अ चार्ट सेटिंग्स. Okay, when I click on this, there is an option of a chart display. In that there is a fourth tab which is boring. बोरिंग मतलब है अगर मेरी पूरी बॉडी जो है उस रेंज से कितनी होनी चाहिए. सो इफ आई पुट अ मैक्सिमम 50%, जो 50 से नीचे है वो बोरिंग होगा मेरे लिए. अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 35, तो 35 से जो नीचे होंगी वो बोरिंग हो जाएगी मेरे लिए. ओके, सो दैट आई कैन यूज, एंड उसके जो कलर है आई कैन चेंज. सो मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर का उसको सेट कर दिया. अगर जो वीक कैंडल होगी वहां पे आपको ये व्हाइट बॉडी आएगा. ओके, सो ये जो है ये 35% के अंदर वाली बॉडीज है. सो विल गेट दिस, वी विल कंसिडर एज अ बोरिंग कैंडल. सो रेस्ट विल बी अ स्ट्रॉन्ग कैंडल. ओके, सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो है ग्रीन बेस ग्रीन. सो बेसिकली जैसे इसका नाम है, ग्रीन मीन्स फर्स्ट कैंडल शुड बी द ग्रीन. बेस मीन्स बेस कितने भी कैंडल्स हो सकते हैं. ओके, बट उनकी बॉडी छोटी रहेगी. एंड द थर्ड जो उसके पार्ट के अंदर रहेगा वो है ग्रीन कैंडल. सो विच मीन्स ग्रीन स्ट्रॉन्ग बॉडी, देन उसके बाद एक बेस आएगा, देन स्ट्रॉन्ग बॉडी. ओके, दैट विल बी कंसिडर एज अ रैली बेस रैली, जहां पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तेजी आएगी, फिर साइडवेज गया स्टॉक, फिर तेजी आया. सो एक्सपेक्ट यही करता है कि वो वापस से और तेजी जा सकता है. ओके, सो वो चीज हमें कैसे पता चलेगा जब हम इसको यहाँ पे टेक्निकल क्वेरी में यूज करेंगे. ओके, सो अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, सो इन प्राइस ओएचएलसी at the last there is an option of a green base green. मैंने जैसे इसको टिक किया, इट्स आस्किंग फॉर बेस बॉडी. सो बेस बॉडी आप अपने हिसाब से कितना भी रख सकते हो. सो मैंने कंसिडर किया 35%, कि जिस कैंडल की बॉडी मैक्सिमम 35% होनी चाहिए, उससे कम वाली मेरे लिए बेस कैंडल्स हो जाएंगी. अगर उससे ज्यादा है तो वो मेरे लिए बेस कैंडल नहीं होंगे. ओके, एंड सेकंड ऑप्शन इज अदर बॉडी, कि जो मेरे लिए स्ट्रॉन्ग बॉडी है, कि मतलब जब भी वो बेस को क्रॉस कर रहा है उसकी पहली वाली और जो बेस को क्रॉस करके जो लास्ट वाली कैंडल है उसकी बॉडी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए. सो आई पुट 65, 50 भी डाल सकते हो आप अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो. ओके, बट वी कंसिडर एज अ बॉडी मोर देन 50%, इट्स अ स्ट्रॉन्ग कैंडल. ओके, और उसको मैं ऐड कर देता हूँ. ओके, जैसे मैंने इसको ऐड किया एंड इफ आई टिक ऑन दिस, मैं रन करता हूँ, तो जो भी स्टॉक्स में अगर आज के दिन में होगा तो वो दिखा देगा. जैसा ब्रिगेड है. ओके, अब देखो ब्रिगेड में क्या हुआ. ये कैंडल 17 में अगर आप कैंडल देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है. अब इसके अगर मेरे को बॉडी फाइंड आउट करने की भी कितनी परसेंट इसकी बॉडी है, बिकॉज हम खाली डिफाइन कर सकते हैं कि बोरिंग कैंडल कितनी होनी चाहिए. सो फॉर दैट वी हैव अ इंडिकेटर. ओके, आपको स्टडीज में जाना है. स्टडीज के अंदर आपको फॉर्मूलाज में लास्ट में पी सीरीज में रहेगा कैंडल ब्रेकअप. ओके, so T2 condition, T2 formula which is candle breakup.
तो अगर आप यहाँ पे चेक कर रहे हो तो यहाँ पे डिस्प्ले में आपको कलर भी दिखा रहा है। ओके, सो जो भी आपकी बॉडीज रहेगी, जो वीक्स रहेंगे, उसको आप कलर भी दे सकते हो। एट द एंड आप इसको प्लॉट कर सकते हो। सो वो ऑलरेडी मैंने प्लॉट किया है CBK। ओके, सो जैसे अगर आप क्लिक करोगे, जिस कैंडल पे भी क्लिक करोगे, ओके, तो वहां पर आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि वो कितने परसेंटेज की है। सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओके, ये जगह पर, तो आप देखो वहां पे लिखा हुआ UB इक्वल टू 11.80। ओके, वो हो गया अपर शेडो। BD is the body which is 77%. Okay, and the LS is lower shadow which is 10.39. So in short, मैंने जो भी कंडीशन यूज की थी वहां पे था कि your base body is less than 35 but your other body should be more than 65. So ये 65 के ऊपर है। सेम वे मैं अगर इस पे क्लिक कर रहा हूँ, so यहाँ पे body is less than 35, यहाँ पे भी 18% है, and यहाँ पे again 78. So in short, we are defining base as well as the strong candle. So इससे क्या होगा कि आपको जो अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक है वो मिल सकता है। ओके, आप जहां पे भी देखो, अगर वो ट्रेंड बना हुआ होगा तो आपको दिखा देगा। ओके, सो अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि कितने बेस बन सकते हैं। ओके, सो देयर इज नो लिमिटेशन इन द बेस, 2 3 4 5, उसके बाद भी अगर कोई अच्छी स्ट्रांग बॉडी बन रही है देन इट विल कंसिडर एज अ ग्रीन बेस ग्रीन। ओके, सो ये बुलिश कंडीशन है। ओके, सो आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो एंड इट्स अ प्योर बुलिश कंडीशन। इसके एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे डाले हैं जहाँ पे मैंने इनपुट यूज किया है। ओके, इनपुट इनपुट इन द सेंस बेस बॉडी का इनपुट एंड अदर बॉडी का, जहाँ पे बेस बॉडी मैंने 35 लिया है एंड अदर बॉडी 65। और ये जो चार्ट है वो लेटेस्ट ही है, आई थिंक लक्ष्मी मशीन का है। ओके, सो मैं यहाँ पे, ओके, ये लक्ष्मी मशीन का है। अब मैंने जैसे इसको यूज किया, ये चार्ट है 4 से लेके 6th का। ओके, 6th को जैसे इसने क्रॉस किया तो चांसेस है कि अगर बेस बॉडी के ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो चांसेस है कि आपका, इन शॉर्ट, जिस फॉर्मेशन के ऊपर अगर आप जा रहा है स्टॉक, तो चांसेस है कि वो स्टॉक पॉजिटिव मूव कर सकता है। ओके, सो ये स्टॉक ने प्रॉपर फॉर्मेशन किया है एंड देन इसका हाई जैसे ब्रेक हुआ, यू कैन सी अ रैली। ओके, सेम वे जो अपने रिजल्ट में आए हुए हैं, ब्रिगेड ब्रिगेड के चांस है, अगर उसका ये जो हाई है बेस बॉडी का क्रॉस होता है तो बुलिश हो सकता है मूवमेंट। सेम चोला फाइनेंस। ओके, इसने ऑलरेडी क्लोजिंग दे दिया है इसके ऊपर, मतलब ये कल के दिन में गैप अप खुल सकता है, चांसेस ज्यादा है इसका, बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉन्ग बॉडी। और अगर आप चेक करो तो ये सप्लाई जोन था। ओके, सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन, सो पहले सप्लाई किया फिर डिमांड आया। सो इन शॉर्ट देयर विल बी चांसेस दैट इसके ऊपर गया है तो पॉजिटिव होगा। ओके, सो वी कैन फाइंडिंग आउट such kind of a stock. Now the next condition is green base red. अब ये क्या हो गया कि यहाँ पर एक ग्रीन बॉडी बनी है, फिर बेस कैंडल्स बनी है, लेकिन वहां से फिर स्टॉक नीचे आ गया है, अगली कैंडल लाल बन गई है। ओके, सो ये कब होता है, जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कोई रिवर्सल हो सकता है। ओके, सो एक अच्छी बुलिश रैली के बाद बेस बन के वो ड्रॉप हो जाता है, सो इट्स अ रिवर्सल। सो हम क्या करेंगे, हम इस पे जाके अपने स्कैनर में जाके चेक करेंगे। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ और क्लिक करके वी चूज ग्रीन बेस रेड। ओके, सो सेम वे 35 और 65, उसको मैं रन करता हूँ। ओके, सो आज कोई वैसा स्टॉक्स नहीं बनाया। अगर मैं चाहूँ तो मुझे अगर बैक टेस्ट करना है, सो क्वेरी ऑफसेट का मैं यूज कर सकता हूँ। अगर मैंने 0 किया तो ये हो गया, अगर मैं 1 करूंगा तो एक बार पहले के जो रिजल्ट होंगे वो मुझे दिखाएंगे। अब यहाँ पर क्या दिखा है, 2 स्टॉक्स है, ICICI प्रूडेंशियल एंड इनफी। अगर मैं क्लिक करता हूँ, ओके, सो आप यहाँ पे चेक करो, दिस इज अ रैली, ओके, वेयर बॉडी इज मोर देन दिस बॉडी इज मोर देन 65%। फिर एक बेस कैंडल आती है जिसकी बॉडी इज लेस देन 35% एंड उसका एक रिवर्स कैंडल आती है। ओके, सो एक रिवर्सल हो गया। अब इस रिवर्सल के नीचे जब आप जाए तो आप शॉर्ट कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ रिवर्सल काइंड। सो उसके लिए लो या फिर कंफर्मेशन होना जरूरी है, बट स्टिल कि हाँ कि एक रिवर्सल है। सेम वे इनफी इनफी ने क्या किया कि आप देखो यहाँ पर इसने 14 को बनाया। ओके, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, देन साइडवेज 2 दिन गया एंड
यहाँ पर उसने 19 को एक रिवर्सल दिखाया, ओके, आज उसने वही चीज को गैप डाउन दिखाया। सो इन शॉर्ट इट विल गिव यू अ रिवर्सल, और साथ में अगर वहां पे कुछ डोजी काइंड ऑफ चीजें हैं जो बिकॉज हमने वो बॉडी लेस देन 35 कंसिडर किया है, विच मीन्स these are weak bodies. Okay, so basically when there is dojis on the top, so we can easily expect it that yes, there will be chances of a reversal. And also at the same time you can see the both candles having a long upper V, so people are shorting the stock or maybe exiting the positions and maybe taking a fresh positions for short. So now you can see on very next day today, because market was in negative but still it opened with a gap down. Okay, so this is how you can use this condition. So now I'll show you one more example, which is Sri Ram City. Okay, so in this stock, I'll choose 11739. This is the code 11379. Okay, so it's on January. Okay, okay, so this is a reversal. You can say this it's a rally, strong candle, two base candle, and then there is a reversal. Okay, so you can short over here. It's not in FNO, but still सपोज अगर किसी ने शॉर्ट किया होता, अगर एफएनओ में होता, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये और नीचे जा सकता है। अब ये जो जो चीज है वो चालू है। ओके, सो अगर यही चीज अगर एकदम टॉप पे होती तो और ज्यादा इफेक्टिव करती, लाइक इनफी। ओके, सो वी कैन यूज दिस कंडीशन टू फाइंडिंग आउट द स्टॉप्स। नाउ कंडीशन नंबर 9, विच इज रेड बेस रेड, जहां पर एक रेड बॉडी बन रही है, फिर एक बेस बन रहा है, देन रेड बॉडी बन रही है। ओके, विच इज ऑल्सो नोन एज ड्रॉप बेस ड्रॉप। अब यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे गया कंडीशन में, I can go to condition and I can select red base red. Okay, condition is base condition is 35 and this is 65. Added 0 and run. Okay, so in the same way you can see Amaraja. This is strong. This is base candle and this is strong candle. So in short, we can expect that it can move further. The same way, Godrej. Okay, so Godrej, you can see a Godrej is having a long base. You can say a long base, but before that you can see a strong candle. Then you having a base of 6 to 7 candles, 6 candles of a base, and then there is a long. So we can expect, because when this candles low break, we can short, and you can see that this base will act as a resistance for further. So when you have a long base, so that time you can expect that this will act as a resistance or a support if it's in a long base for a green base green. So this base will act demand and supply zone for the stock, and this will help you to give a resistance or a support. So this is a negative stock. Okay, Hikal is there. Okay, Hikal is already in a negative. LTI, LTI is already in a negative trend. Marico. Okay, so this is how you can find out these stocks. But the best way is, suppose if you get a stock where a close is below the base body, base lowest body, because in this candle you can see this body's close is much higher than the base low. But if you get a stock where you will get a base is lower than the sorry, this main candle, the current candle close is lower than the base body is low, then you can expect a sharp fall. ओके, सो जब आपका फॉर्मेशन होगा, उसका जो करंट कैंडल होगा उसका लो जो है या उसका जो क्लोज है वो एटलीस्ट प्रीवियस जो बेस बना हुआ है या प्रीवियस के जो फॉर्मेशन है उससे नीचे होना चाहिए, सो दैट विल बी एक्सपेक्टेड कि वहां पर एक अच्छा फॉल देखने हमें मिल सकता है। ओके, सो दिस कंडीशन will help you to finding out a negative trend stock. Okay, so this is example of escort. Okay, so you can see escort.
Okay, so escort is at near the top, so chances ज़्यादा है कि वो नीचे जाएगा. Okay, and now you can see this base is acting as a resistance. So जितने बार जाएगा उतने बार उसको टकरा के नीचे आने का चांसेस रहेगा. So ये एक आपके लिए रेजिस्टेंस बनेगा. So suppose if I traded in this stock, so I will take this base high as a stop loss, because मुझे पता है कि जो भी काम करेगा वो बेस करेगा. अगर वो बेस के ऊपर चलेगा तो चांसेस है कि वो वापस बुलिश ट्रेंड हो सकता है. Okay, so we can use this condition for finding out negative trend stocks. Now condition number 10, which is red base green, also known as a drop base rally. अब ये क्या होता है कि जब कभी कोई कैंडल रेड कैंडल फॉर्म होने का, जैसे हमने रिवर्स देखा था ग्रीन बेस रेड का, सो ये बॉटम रिवर्सल है. सो हम इसको यूज करेंगे टू फाइंडिंग आउट अ रिवर्सल और अ लॉन्ग. सो जैसे आप इसको यहाँ पे जाओगे, कैन गो एंड यू कैन चेक रेड बेस ग्रीन. सो सेम वे बेस बॉडी मैंने ले ली एंड अदर बॉडी विल बी 65 एंड मॉडिफाइड. ओके, सो आज के दिन में कौन से स्टॉक्स है, जैसे फर्स्ट है ट्राइडेंट, मैं नीचे से लेता हूँ. सो यहाँ पे क्या, ये रेड बेस ग्रीन ऊपर आ गया, 10 लाख रेड बेस ग्रीन, बट इनकी बॉडी जो है यू कैन सी कि बॉडी अच्छी है, लाइक मोर देन 65. सो इट विल कंसिडर एज अ रिवर्सल. सेम स्पार्क पावर ग्रिड, ओके, एंड जस्ट डायल भी उसका पार्ट है जो आज अच्छा खासा मूव हुआ, मोर देन 14%. ओके, एंड जेके पेपर. अब ये चीज आपको एट द डाउन ऑफ द ट्रेंड मिलेगा तो और ज्यादा इफेक्टिव होगा. सो if you will get this stock at the bottom of the trend, any negative trend, then it will be more effective for you to finding out a correct stock, but still it's a good condition to finding out a reversal. Okay, so in the same way this base will act as a support for you, because this is a reversal condition. So you can go long on the green candle side, and this base low will you can take as a stop loss, and this base will act as a support. Okay, so this you can use. Now the example is Aarti Industries. Okay, so I'll use 7. Okay, so this is an Aarti. Now you can see this is the proper base, this is a drop, this is base of 2 candles, and you can see at the same time all the 3 candles are making a lower shadow. So we can expect there will be a rally, and on the day 7th of Jan, you can see a closing which is higher than the last 3 candles, and also at the swing high. We can expect a swing, but it's a very small swing. But yes, it's a swing. So once it close above that, so we can expect a long, and we can take this low as a bottom. So it's a reversal. So it's a reversal for buyers. Okay, so this is the condition number 10. So these are the all conditions of the price OHLC. Now tomorrow we going to see the price OHLC for intraday. So where you can see a condition on the basis of the price as well as the volume, so that you can make a proper balance and you can use this condition to finding out a better stocks. Okay, so because if you manage a query with the proper balance, like indicator as well as the price, so you will get a better stock. Okay, so this will be these are the topics for the tomorrow. Okay, so we'll see you at tomorrow at 4, and we'll see this condition. Before that, suppose if you missed the day 1, or if you want to rewatch the day 1 webinar, so for that you can go to your YouTube channel and you can watch. Okay, so yeah, for any queries you can contact us on this query this numbers. So yeah, we'll help you out. And that's all for today's webinar. See you tomorrow at 4. Thank you.